Good morning, children. I welcome you all to your new class. Once again, welcome back to the new class, that is class 2. This is your computer period. Children, I'll be teaching you computer. Last year also you have studied computer from me, so you know me very well. So children, before starting, let's revise what we have studied in our previous class. Children, in our previous class, we have studied all about computers. Whatever we are going to read this year, except one or two chapters, we have already studied about these things. But as we move to our next class, we proceed to the next class, our difficulty level increases. So here also we will be reading more about the same topics in this book. Children, before starting, let's revise. So in our previous class, we have already studied about computer, and we studied computer is a magic machine. Magic machine because it does lot of work for us, and the work which it does for us is just like a magic. क्योंकि चिल्ड्रन कुछ ऐसे कंप्यूटर काम करता है जो कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. ये बहुत जल्दी काम करता है और इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी भी हमसे बहुत ज़्यादा है. हम इतना काम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते. जो काम हम 2 या 3 दिन में करते हैं वो फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स में और टाइम में वो कर सकता है. तो इसीलिए चिल्ड्रन इट इज़ वेरी फास्ट एंड इट वर्क्स वेरी एक्यूरेटली. दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज मैजिक मशीन एंड ऑल्सो वी कॉल इट एज a smart machine. And then machine, what is machine, children? Any object or any device which does any which makes our work easy or makes our work fast, and it makes our life also comfortable, is called machine. So any machine, any device which makes our work easier is called machine. तो यहाँ पे we have many machines around us. Children, can you name some machines in your home? आप अगर अपने चारों तरफ देखें, you look around yourself in your house, you can find many such machines which does work for you and makes your life easy and comfortable. So can you name some machines? So children, the very important thing, the fan which is moving on your head and it gives you cool air, and in this way you are not feeling hot and you are feeling comfortable. So it is also one of the machine. Then you have television, children. Television lets you know all about the country and the world, what is happening around yourself. Your whatever happens around you, you get to know about it. Sitting at your home, you know anything that happens around the world within fraction of time. So not only it gives us information but also it's entertain us. वो हमें entertain भी करता है, हमारा entertainment भी करता है. So children, then we have washing machine. It cleans clothes and it helps your mother in cleaning the clothes. It helps your mother's work easy. It makes your mother's work easy. And then refrigerator. Refrigerator is another machine, children, which gives us cool water. It keeps our food fresh. That it also helps you keep your food and fruits, vegetables fresh. तो आप जो भी चीज़ें रेफ्रिजरेटर में रखते हैं वो 2-4 दिन तक फ्रेश रहती है. मतलब जब तक आप रखेंगे वो फ्रेश रहेगी, लेकिन ये आपकी चीज़ों को ख़राब होने से या फिर वेस्ट होने से बचाता है. एंड देन यू हैव मिक्सर ग्राइंडर. In mixer grinder also, children, it helps your mother. You can grind whatever you want to grind. So in this way, children, there are many such machines which we use in our house. And in our previous class, children, we have also studied that these machines are also of different types. For example, some are used for entertainment, some are used for moving from one place to another, or some are used as a household work. तो ये machines भी हम अलग अलग types के होते हैं और अलग अलग purposes के होते हैं. So here today we are going to talk about another machine which is called computer. You can see, children, here in the picture there is a picture of a computer. You can see here, this is a picture of a computer, but this machine is somewhat unique or wonderful and different from the machines which we have in our house. Of course, they
these are similar, but the working of this machine is somewhat different from the our ordinary machines which we use in our house. सबका अपना अपना काम है, अपना अपना पर्पस है, लेकिन कोई एक काम करता है और कोई दूसरा काम करता है. लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कंप्यूटर है, इट डज लॉट ऑफ वर्क फॉर अस. दैट इज़ वाई वी कॉल इट अ स्मार्ट मशीन, वंडरफुल मशीन, और वी ऑल्सो कॉल इट एज मैजिक मशीन. तो इस तरह से ये हमारे बहुत सारे काम करता है, इसलिए हम इसको बहुत सारे नामों से बुलाते हैं. और इसीलिए चिल्ड्रन वी कैन से इट इज़ समवॉट like a magic machine. So here in this chapter, children, we are going to read all about this machine. The name of the topic is, our first topic is computer and its types. So in our previous chapter also we have studied about different types of computer. We have studied about places where computers are found and the work done by the computer. And here once again we are going to read these things only, but in a descriptive way. So in first chapter, that is chapter 1, children, here we have computer and its types. In this we are going to cover the topic what is a computer. We have already studied what is a computer. Then types of computer. Under types of computer we have different types of computer, that is supercomputer, desktop computer, laptop computer, tablet and smartphone. So children, these are the topics which we are going to study in this chapter. Now children, computer. What is a computer? Our first topic is what is a computer. Just now I told you, till now we have studied many definitions of computer and all the definitions are right. For example, computer is a smart machine. Why computer is a smart machine? Because it does lot of work for us and it works very fast. That is why we call it a smart machine. Then we have studied it is a magic machine because it does lot of work, and that too without making any mistake. Without making any mistake and without कंज्यूमिंग मच टाइम. मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, जल्दी भी करता है, गलतियाँ भी नहीं करता और उसे याद भी रखता है, इसलिए हम इसे मैजिक मशीन कहते हैं. बट हियर चिल्ड्रन, टुडे द डेफिनेशन विच वी आर गोइंग टू रीड इज अ बिट डिफरेंट. Let us see what is that. Before that children, before starting our chapter, let us meet Lappy. Let's introduce with Lappy. Here is Lappy. This one is Lappy, Lappy. I have already introduced you with Lappy in our previous classes. By now you are familiar with Lappy. Now this is Lappy. Lappy will be telling all about the computers time to time in this book. So जितनी भी information हमको computer के बारे में मिलेगी, that will be given by the Lappy. So children, Lappy welcomes us in this class and he says, now you are in a new class. So he says, hi friends, welcome back again. As we have already met him in our previous class, he has already welcomed us in previous class. Now he is welcoming us once again in the new class, that is class 2. You have come to class 2 from class 1. So this is your new class. Lappy welcomes you and lets you study more about computer. As we go higher children, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हर क्लास में नई नई चीज़ें हम पढ़ेंगे. टॉपिक मे बी द सेम, बट जो डिफ़िकल्टी लेवल है हमारी बढ़ती जाएगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानेंगे. तो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर. ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है, लेकिन चीज़ें और थोड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती जाएंगी. सो चिल्ड्रन, बट बिफोर दिस लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. सो हम एक बार कंप्यूटर के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले हमें ये जानना है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. सो लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, मैजिक मशीन, and now we are going to read that a computer is a electronic machine. As we know children, anything which runs on electricity, कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है हम उसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं. तो यहाँ पे जो कंप्यूटर है इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. So electronic, the word electronic comes from electricity. Any machine which works on electricity या runs on electricity is called electronic. And machine we already know, any object which makes our work easier is called machine, or any device which makes our work easier is
machine. So a computer is an electronic machine. It works very fast without making any mistake. As we know children, computer is a machine which works very fast and it doesn't make any mistake. ये कभी भी कोई mistake नहीं करता है and it can do many things. That is why we call it as smart machine also. हम क्योंकि man has made computer and it has made to make its work his or her work easier. अब now it does lot of works for us without making mistakes and it does very fast also. So these are the benefits of computer. ये सारे फायदे कंप्यूटर के हैं, इसी वजह से हमने कंप्यूटर को बनाया है. So children, there are lot of difficult words. For example, here we have here we have machine, electronic, then we have mistake, and then we have things. So children, whichever spelling you have difficulty you learn, and otherwise all the highlighted words which are written with dark colors has to be learned. इन सब की स्पेलिंग आपको लर्न करना पड़ेगा. यहाँ पे जैसे कि COMPUTER कंप्यूटर, ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक, देन MACHINE मशीन. तो इन सब की स्पेलिंग आपको लर्न करनी होगी. देन मिस्टेक, MISTAKES mistakes, and things. So children, till now we have understood that computer is an electronic machine. Why it is an electronic machine? Because it works on electricity or it runs on electricity. As I told you, every machine or every object needs some energy. और ये एनर्जी उसे कहाँ से मिलता है? फ्यूल से, जिसको वो लेता है. इफ़ यू वांट टू रन अ कार, यू नीड फ्यूल. पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए. तो फ्यूल क्या है? वो चीज़ है जिससे हमको एनर्जी मिलती है. जैसे कि हमारे लिए फ्यूल क्या है? खाना है. हम खाना खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है, फिर हम वर्क करते हैं. तो यहाँ पे कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी इज़ द फ्यूल. उस फ्यूल से उसको एनर्जी मिलती है और वो वर्क करता है. Now, it helps us play games also. Children, as we know, using the computer we can play games also. हम कंप्यूटर को यूज़ करके गेम्स भी खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं और गाना सुन सकते हैं. उसके बाद कैरी आउट मेनी अदर सच वर्क्स. हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. अपना कोई भी चीज़ सेव करके रख सकते हैं. उसके बाद so children, it helps us doing many things, as we have studied in our previous chapter also, class also, that computers are found at different places. Why computers are found at different places? Computers are found at different places for doing different work. जहाँ पे कंप्यूटर है वहाँ पे अलग अलग उसका पर्पस होता है. दे आर फाउंड इन स्कूल, दे आर फाउंड इन होम्स, दे आर फाउंड इन ऑफिसेज, दे आर फाउंड इन शॉप्स, दे आर फाउंड इन मॉल्स. तो हर जगह उसका अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग काम होता है. तो इस वजह से वो बहुत सारे काम करते हैं. यू कैन सी कंप्यूटर्स इन मॉल्स, वी कैन सी कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन. अब रेलवे स्टेशन में टिकट बुक करना है, एयरपोर्ट में टिकट बुक करना है, शॉप में बिलिंग करना है. तो it has different purposes. So all these are the works done by the computer. So it can do lot of work for us. Now, अगर हम घर पे हमारे पास कंप्यूटर है, हम गेम्स खेल सकते हैं. वी कैन डू आवर प्रोजेक्ट्स, वी कैन सॉल्व कैलकुलेशंस, देन वी कैन वॉच मूवीज़, वी कैन लिसन टू द म्यूज़िक. तो ऑल दीज आर द वर्क्स डन बाय द computer. And children, we have studied one more thing. There are different types of computer. You can see here children, there are two pictures given here. These two are the computers only, but these two are different types of computer. First computer you can see children, it is written laptop. Lap means गोद. अपने दोनों पैरों पे रख करके हम इस पे कहीं पे easily, comfortably, there is no need of table, chair or any other support. We can keep it on our lap and work on it. तो we have made things easier. अपने काम को easy बनाने के लिए, comfortable बनाने के लिए, we have made different types of computer. Nowadays, we are not just stuck to a single type of computer, but we have different types of computer about which select different types of computer. So in this chapter, we have already studied about computer and we will be reading about different types of computer. So let us come to our next page. Here in next page children, types of computer. अब
Why do we need different types of computer? We need different types of computer as per our requirement. कहीं हमें थोड़े काम की ज़रूरत होती है, कहीं हमें बहुत ज़्यादा काम करना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वी सेलेक्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ computer, and these computers were made. Some are big and some are small, and they have varying sizes as per their work or as per the requirement. So children, here you can see the types of computer under this topic. Nowadays different types of computers are used by people. Some computers are big and others are small in size. So we have some small computers or big also. Let us study the different types of computers. So let us study about different types of computers. So children, under this topic we are going to read about different types of computer, and these different types of computers are used as per their work. For example, first type of computer, children, that is supercomputer. Supercomputers are very big and powerful. They work very fast. They can store a huge amount of information. Supercomputers are used in large companies and research centers. So children, as we know, these computers are very big in size and their work efficiency is very large. मतलब इनके काम करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है और इनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा है. तो आपको पता होगा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत सारा काम रहता है, बहुत सारा डाटा स्टोर करना रहता है. तो इन सारे कामों के लिए हम यहाँ पे सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. लेकिन इसके अलावा चिल्ड्रन, इट नीड्स लॉट ऑफ वर्क टू बी केप्ट. उसको रखने के लिए हमें बहुत सारी स्पेस की ज़रूरत होती है. तो जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, वहाँ हम इसको रखते हैं. अब अगर हम चाहें सुपर कंप्यूटर को अपने घर पे रखना, तो क्या हम रख सकते हैं? अगर रख सकते भी हैं तो हम क्यों उसको रखेंगे? हमें इतने बड़े कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है. ना तो हमारे पास इतना स्पेस है, ना इतना ज़्यादा काम है, और ना ही हमें बहुत सारा डाटा स्टोर करना है. तो यहाँ पे इसीलिए चिल्ड्रन, वी डोंट हैव सुपर कंप्यूटर्स एट होम, बट इन रिसर्च सेंटर जहाँ पे रिसर्च होता है वहाँ पे बड़े कंप्यूटर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा वहाँ पे स्टोर करना होता है, बहुत सारा काम होता है. इसलिए वहाँ पे हम ये दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर वी कैन सी देयर. And big companies also, large companies also, we have lot of work to be done and lot of data to be stored for that is why we use these types of computer in these places. So supercomputer are very big, as the name itself tells children. Super, supercomputers, supercomputers. Supercomputers are very big in size. ये बहुत बड़े होते हैं और बहुत पावरफुल होते हैं. As we know कि these computers are used for doing lot of work, and it is used at the places where lot of data has to be stored. अब they work very fast. काम ज़्यादा है तो काम हमें जल्दी करना है, इसलिए भी हम इसको रखते हैं. दे कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. डाटा का मतलब इंफॉर्मेशन, जो भी हम उसमें काम कर रहे हैं, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड दैट हैज़ टू बी स्टोर्ड. तो इसके लिए भी हमें लार्ज कैपेसिटी वाले कंप्यूटर की ज़रूरत होती है. और दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स आर फाउंड इन companies, big companies or large companies or research centers. So this is children first type of computer. Now coming to the second type of computer, desktop computer. Just now I told you about the desktop computer, children. Desktop computers are small in size. ये size में छोटे होते हैं. These are small in size and can be placed on a desk. एक desk पर भी आप इसको place कर सकते हो. So these computers are used in homes, ऑफिसेज, शॉप्स, स्कूल्स, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, इन सारी जगहों पे हम इनको यूज़ करते हैं. एंड दीज आर यूज्ड फॉर ऑफिशियल वर्क. wherever we need to do any kind of official work, we can use these types of computers. And even in schools for studies purpose, in offices also we use, and for studies purpose also we use. बच्चों को अगर प्रैक्टिस करनी है या फिर कुछ सिखाना है तो हम इस तरह के कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. नाउ कंप्यूटर्स दैट वी सी इन द स्कूल, computer lab is also desktop computer. You must have seen your computer lab. अगर कभी आप अपने स्कूल गए हो तो आपने अपने स्कूल में देखा होगा
जो आपके कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स होते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, वो हम टेबल टॉप पे रखते हैं या डेस्क के ऊपर रखते हैं और ईजिली वहाँ से हम उससे वर्क कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल CPU होता है, यू कैन सी इन द पिक्चर चिल्ड्रन हियर, आप यहाँ देख सकते हो कि हियर वी हैव डिफरेंट पार्ट्स इन दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर। दिस इज मॉनिटर, this part of the computer is used to display whatever you do. This is keyboard, this is used to enter the data या number alphabet जो भी आपको enter करना है. This one is CPU. CPU is the main processing unit जिसमें हम जो भी काम यहाँ देते हैं it is done in the CPU and there is a small mouse like structure. This is called mouse. Mouse is used to control the pointer on the screen. हमें कुछ भी move करना है, select करना है तो हम माउस का यूज़ करते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डेस्कटॉप. नाउ चिल्ड्रन, दिस इज नॉट वेरी बिग कंप्यूटर एंड दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एज आई टोल्ड यू आर यूज्ड इन होम्स. घर में हम इनका यूज़ करते हैं. हमें घर में बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है, या तो हमें होमवर्क करना होता है या फिर हमें अपने घर का अकाउंट मेंटेन करना होता है या फिर हमें मूवी देखना हो, गेम्स देखना हो, देन वी यूज़ दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. और ऑफिसेस, इन ऑफिसेस एज वी हैव डिफरेंट कंप्यूटर्स, हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो दीज कंप्यूटर्स आर यूज्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन. तो उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन जितना काम कर सकता है दैट इज़ डन इन दैट. सो दीज आर द बेस्ट वंस टू स्टोर द डाटा एंड फॉर यूसेज. तो ऑफिस में भी हम यूज़ करते हैं. शॉप्स में आपने देखा होगा बिलिंग के लिए भी यूज़ दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर. एंड स्कूल्स में यू हैव ऑलरेडी सीन these types of computer. Even in school office or principal office या library में to keep the record of books, तो ये सारी चीज़ों के लिए we use desktop computer. So children, this is second type of computer. Then our third type of computer is laptop computer. As you can see children here, laptop computer can be kept as it is very small in size, light in weight and can be easily carried from one place to another, and while moving from one place to another we can easily keep it on our lap and work through the laptop. तो ये हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो ऑफिस वर्क से, ऑफिस से के पर्पस से कीप ऑन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हो, तो दे यूज़ दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कैरी करने के लिए लाइट होता है, छोटा होता है और ईज़िली हम इसको कैरी कर सकते हैं. देन इट इज़ डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट फिट्स कंफर्टेबली ऑन योर लैप. नाम ही लैपटॉप है, आराम से हम इसको लैपटॉप पे, अपने लैप पे रख सकते हैं और उससे काम कर सकते हैं. कैन वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज कैन बी चार्ज्ड एंड used. It works on batteries and batteries are charged and can be used for long duration. तो हम एक बार अगर लैपटॉप को चार्ज कर लेते हैं तो उसकी बैटरी के थ्रू हम इसको यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम बहुत टाइम तक बिना कनेक्शन के, बिना इलेक्ट्रिसिटी पार के इसको यूज़ कर सकते हैं. सो दीज वर्क ऑन बैटरीज और इलेक्ट्रिसिटी से भी काम करते हैं, लेकिन अगर बैटरी ख़त्म हो गई तो हम उसको चार्ज कर सकते हैं. ये हमारे पास तो घंटों या दिनों तक हम बिना कैसा काम करते हैं उसके हिसाब से वी कैन यूज़ इट विदाउट पावर सप्लाई. सो चिल्ड्रन, दीज आर थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर. दीज आर अनदर lightweight computers which can be used comfortably at anywhere and any place. Now children, let us talk about our fourth type of computer. Children, tablet PC. Tablet PC is जस्ट लाइक अ मोबाइल फ़ोन, लेकिन सिर्फ इसका जो स्क्रीन है या साइज़ है थोड़ा बड़ा होता है. इट इज़ अनदर स्मॉल साइज़ कंप्यूटर. ये भी एक तरह का कंप्यूटर है. टैबलेट पीसी और द टैबलेट कंप्यूटर भी हम इसको कहते हैं. इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़. ये बहुत छोटा होता है. अगर हमको लगता है कि लैपटॉप थोड़ा महंगा है, ये उससे कम कॉस्ट का होता है, इजीली हम इसको ख़रीद सकते हैं. इस पर हम अब इसकी साइज़ बड़ी होने की वजह से लैपटॉप इतनी साइज़ बड़ी नहीं होती, लेकिन कंपैरेटिवली मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमको काम करने में आसानी रहती है. और हम अपना स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस आराम से कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर्स बना सकते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं. ये सारे काम हम टैबलेट से कर सकते हैं. सो अ टैबलेट पीसी और टैबलेट कंप्यूटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर and which is very small in size.
tablet is equipped with a digital camera, microphone and touch screen. इसमें वो सारे फैसिलिटीज़ होते हैं जो एक स्मार्ट मोबाइल में होता है, जैसे कि डिजिटल कैमरा होता है, माइक्रोफोन होता है और टच स्क्रीन होता है. वी कैन ईजिली ऑपरेट इट यूजिंग द स्क्रीन. यू कैन वर्क ऑन अ टैबलेट बाई टचिंग द स्क्रीन विथ योर फिंगर. आप जब भी टैबलेट पे काम करना चाहो उसके स्क्रीन को आप टच करके काम कर सकते हो. सो it has touch screen. By touching the screen you can work on it. So this is another type of computer. Now children, the last type of computer about which we are going to study here is smartphone, and it is very common to you all nowadays. Online classes, if you don't have a laptop, you are using smartphones for the uh, for your online classes, and these are used for all purposes, for solving your papers, for sending mails. हर काम हम इससे करते हैं. अब फ़ोन nowadays, अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो not to worry, we can use our smartphone as a computer. A mobile phone that provides computer facility in addition to basic phone facilities is called smartphone. Means वो फ़ोन जो कि कंप्यूटर मोबाइल के बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा कंप्यूटर की भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है. दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड दिस टाइप ऑफ फ़ोन इज कॉल्ड स्मार्टफोन. इस तरह के फ़ोन को हम स्मार्टफोन कहते हैं, जिसे हम फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन वाले सारे काम कर सकते हैं, उसके अलावा हम कंप्यूटर का भी काम कर सकते हैं. इट हैज़ अ बिल्ट इन डिजिटल कैमरा. द स्मार्टफोन्स ऑल्सो हैव डिजिटल कैमरा. इससे भी हम फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं. वी कैन क्लिक इमेजेस. इट ऑल्सो हैज़ अ टच स्क्रीन. दिस टाइप ऑफ मोबाइल also has touch screen. We can operate it by touching the screen. So children, these are the different types of smartphones. Now you all are familiar with these types of computers. The only supercomputer is the one which you may not have seen or may not have used. Otherwise डेस्कटॉप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप कंप्यूटर या टैबलेट पीसी या स्मार्टफोन कहीं ना कहीं देखा या आपने यूज़ किया होगा. तो चिल्ड्रन, द चैप्टर इज़ वेरी स्मॉल. आप एक बार इसको पढ़ लेना. वी विल बी रीडिंग इट वंस अगेन इन आर नेक्स्ट video. So let us revise whatever we have studied till now. So children, till now we have studied what is computer. A computer is an electronic machine. Electronic means something that runs on electricity. It works very fast. ये बहुत जल्दी काम करता है. And without making any mistake. Without making any mistake. It can do many things. ये बहुत सारे काम करता है. For example, children, you can play games, you can watch movies, you can listen to the songs, you can do your homework, you can do internet surfing. आप कोई भी चीज़ आपको डाउट है आप ढूंढ सकते हो. और इसके अलावा भी कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है. एंड देन वी स्टडीड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, हियर depending upon the work we use different types of computer. So children, supercomputer is one of the largest computer, and it is used at the place where we have lot of work to do. For example, companies and research centers, and also they have lot of space to keep this because it is very big. It occupies lot of space, and it has capacity to store large amount of डाटा ऑल्सो. तो इसके काम के हिसाब से, इसके यूसेस के हिसाब से हम घर पे इसको नहीं रख सकते, स्कूल्स में नहीं रख सकते, ऑफिस में नहीं रख सकते हैं, बट वी यूज़ इट इन कंपनीज और रिसर्च सेंटर्स जहाँ पे बहुत सारा काम होता है. वहाँ पे इन कंप्यूटर्स को हम यूज़ करते हैं. देन डेस्कटॉप कंप्यूटर चिल्ड्रन. डेस्कटॉप कंप्यूटर स्मॉल साइज कंप्यूटर है. यू मस्ट हैव सीन दीज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इन शॉप्स, मॉल्स, स्कूल्स, और इवन समटाइम्स वी कीप इट एट आर होम्स ऑल्सो. तो ये छोटा कंप्यूटर होता है और इसका कैपेसिटी जैसी हमारी यूज़ होती है उस हिसाब से हम इसको अपने घर पे या ऑफिस में रखते हैं. देन लैपटॉप कंप्यूटर. दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज़ लाइट इन वेट, विच कैन बी कैरीड ईजिली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, and it is designed in such a way that it fits conveniently on your lap. That is why it is known as laptop, and it can work on batteries as well as main supply.
Then tablet computer, children. Tablet computer is another small computer which is just like a mobile phone, and it has built-in digital camera, and it can be used by touching the screen. It has touch screen, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन. इसके स्क्रीन को टच करके हम इससे काम कर सकते हैं. देन लास्ट वन इज स्मार्टफोन, चिल्ड्रन. स्मार्टफोन इज वेरी कॉमनली यूज्ड computer. It has the facilities of basic मोबाइल फ़ोन एज वेल एज कंप्यूटर. जो भी हम कंप्यूटर में काम कर सकते हैं वो सारे काम हम इस स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं. दिस ऑल्सो हैज़ डिजिटल कैमरा एंड इट ऑल्सो हैज़ टच स्क्रीन, और by clicking the images we can use the images also because it has built-in camera also. So this is another important type of computer which is commonly used by all of us. So children, once again I end my class with this. Please go through the chapter, learn difficult words. We will revise this chapter and read it once again in our next video. Till then, thank you.